You know that in these days, the main and first concern of every corporate industry, that is the MBA graduates who are passed out from any college, they are not employable. Like they are not ready for the job market. Like what are the other colleges that you are targeting before joining RIM? क्योंकि हर स्टूडेंट जो पुणे आना चाह रहा है उधर इज फ्रॉम लाइक पुणे लाइक महाराष्ट्र और फ्रॉम अदर स्टेट्स, राइट। ये बहुत एक कंफ्यूजन क्वेश्चन है, ठीक है। पुणे में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, पीजीडीएम करना है, एमबीए करना है या कोई दूसरी डिग्री कोर्स करना है तो पीजीडीएम के लिए रिम पुणे चूज करने का एक वन एंड वन आप एक आंसर दे दो। उसके साथ साथ आप रिम पुणे को चूज करने के पीछे आपका डिसाइडिंग फैक्टर क्या था उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। आई हैव सीन योर कॉर्पोरेट सेल लाइक प्लेसमेंट सेल, तो थोड़ा सा डिटेल में आप बताओ कि अगर जैसे कि आप सेकंड ईयर से हो, ठीक है, तो प्लेसमेंट का एक्सपेक्टेशन आपका क्या है, ठीक है, और कॉलेज ऐसे क्या अलग से आपके प्रोफाइल के लिए काम किया है, ठीक है, सो दैट कि आप एटलीस्ट एक अच्छे आरओआई का एक्सपेक्ट कर सकते हो। As sir, you said that we have the highest package of LP from it starts from 8 to 9 lakhs. Is it true? Yes, sir, it is true. Okay. Actually, it is true. According to your study, what is your expected LPA? It's like about lakh only. Since you are from second year, ठीक है, आपकी इंटर्नशिप तो ऑब्वियसली खत्म हो गई होगी, राइट। सो हाउ वाज योर इंटर्नशिप और उसमें आपको सीखने को क्या मिला? लाइक इज देयर एनी फैकल्टी फ्रॉम आईएम्स, लाइक कोई आईएम्स ड्रॉप आउट है कॉलेज में आपके फैकल्टी में? Yes, Tanushree ma'am, Tanushree Agarwal. Okay. She's she studied in IIM Bangalore. She teaches us economics. कुछ ऐसे टिप्स आप एक एक टिप्स दे दो सो दैट कि हमारे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो कि वो अगर रिम पुणे को चूज़ कर रहे हैं उनके लिए क्या वैल्यू एडेड करेगा, या फिर अगर वो पीजीडीएम करना चाह रहे हैं तो उनको क्या चैलेंजिंग फैक्टर फेस करना पड़ सकता है। So hi everyone, welcome back to a new video. Today I am here at RIM Pune, Ramachandra International Institute of Management, Pune, Maharashtra. One of the top B school, one of the top corporate style B school in Pune, Maharashtra. We have some students who are pursuing PGDM here. Let's ask them some couple of questions and try to figure it out. Like what are their real experience, what is the admission process, what is the exposure, what is the campus life, and everything that a PGDM aspirant wants to know. And yes, they are the only one who can guide you properly about RIM Pune. So hi student. Hi sir. My name is Roshan. Before start this video, let me tell you one thing. Like when we review a college, we have some parameters. We have maintained some parameters, and according to that parameters, we ask questions to the students so that our viewers can make understand what kind of videos is going on. Like we are not promoting college for the promotion, or we are not criticize college for the negative impact. So let's start with the basic introduction first. Hello guys, my name is Radhika Deshpande and I am from Pune and I am pursuing PGDM in Agribusiness Management. Hello everyone, my name is Akshata Balasaheb Raite and I'm from Nasik. Currently I'm pursuing PGDM in Agribusiness Management from Ramachandran International Institute of Management, Pune. Since you are from second year, our first question is to, like, if you are watching a news report or if you are reading newspaper, you know that in these days the main and first concern of every corporate industry, that is the MBA graduates who are passed out from any college, they are not employable. Like they are not ready for the job market, and the reason behind this outdated curriculum that the colleges are providing. क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है कि चैट जीपीटी आ गया है, मशीन लर्निंग आ गया है और एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। सो व्हाट इनिशिएटिव हैज रिम टेकन टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर द जॉब मार्केट? इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओ। So sir, our college that is RIM providing us industrial exposures and certifications like our domain certification. So we had exposure at Sayadri Farms Nasik. So there we had training of 10 days. Like we had certification of management of FPOs and like other business analytics certification. Then at Delhi we had certifications of cooperatives at NCUI. So I don't think so other colleges provide that much industrial exposure or certification that RIM is providing to us. And I think it will definitely help us. Like we can add that certification in resume. So definitely it will build our report. Obviously, because like these are the things which you call like industry exposure, practical learning, right? Yes. आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? Yes, of course, sir. As she told that we had our domain certificates. Apart from domain certificates, regular college terms, we also have the certificates like related to our training sessions, related to Excel, related to our soft skills, our aptitude building sessions are also going on. Current affairs. These external sessions are also going on in our college. Okay, so these are provided by the industry expo or only by the faculty? No, sir. These are provided by the industrial exposures also. Industry expert. It is experts. ओके, सो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम आवर व्यूअर्स। लाइक हमारे व्यूअर्स क्या है कि पेरेंट्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं,
like the main demandable question that is faculty background, not in terms of teaching experience, in terms of industry experience. like ऐसा नहीं कि वो लोग सिर्फ सपोर्टिव हैं, उनका अगर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होगा तो कहीं ना कहीं रिलेवेंट स्किल्स आपको आपके ड्यूरिंग द कोर्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा. ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओ. As a faculty background is so strong because they hold the PhD degrees. Every faculty holds the PhD degree. Even also they had the exposures of industries of 15 to 20 years. Also Okay. they had the academic experience also. So they they told various types of industries how it works. Okay. Like we had the subjects of entrepreneurship, Okay. governance. So related to that, they told us the various types of how we have to expose or how we get more knowledge related to that subjects. ओके. लाइक इज देयर एनी फैकल्टी फ्रॉम आईएम्स, लाइक कोई आईएम्स ड्रॉप आउट है कॉलेज में आपके फैकल्टी में? Yes, Tanushree ma'am, Tanushree Agarwal. Okay. She's she studied in IIM Bangalore. She teaches us economics. Okay. So she has told us that how to build our financial growth, like how we have to not only in industrial terms but also out of the industries, राइट राइट. out of the industries also in our personal life how to get a financial growth. She has told she has teaches us every step related to that. Okay, it's an important question from our viewers, right? Like what are the other colleges that you are targeting before joining RIM? क्योंकि हर स्टूडेंट जो पुणे आना चाह रहा है उधर इज फ्रॉम लाइक पुणे, लाइक महाराष्ट्र और फ्रॉम अदर स्टेट्स, राइट. ये बहुत एक कंफ्यूजन क्वेश्चन है. ठीक है, पुणे में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, पीजीडीएम करना है, एमबीए करना है या कोई दूसरे डिग्री कोर्स करना है, तो पीजीडीएम के लिए रिम पुणे चूज करने का एक वन एंड वन आप एक आंसर दे दो. उसके साथ साथ आप रिम पुणे को चूज करने के पीछे आपका डिसाइडिंग फैक्टर क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ. So before RIM, I was targeting colleges like Vamnicom, Okay. and I was also selected in Indira College. But in Indira, Indira Business School? yes, sir. But in Indira, there were no specialization like agribusiness management, as I Okay. have pursued in agriculture, degree in agricultural biotechnology. Okay. So your specialization so- that is Yes, sir. agriculture. Okay. So I just wanted to pursue my career in business specialization. So in Vamnicom, I didn't get fitted in some of the criteria. So I chose RIM over DY Patil. So as you are from agribusiness specialization, like what are the other specialization that providing by the RIM? So apart from agribusiness management, there are specializations like when we were in first year, there were specializations like marketing, then HR and finance, and also RIM started the pharmaceutical management. Okay. So in our second year, RIM has collaboration with Global MBA, Okay. and they have also started the specialization like business analytics. Business analytics. Yes. Okay, BA. I want to ask you this question. Like I have seen your corporate cell, like placement cell. तो थोड़ा सा डिटेल में आप बताओ कि अगर जैसे कि आप सेकंड ईयर से हो, ठीक है, तो प्लेसमेंट का एक्सपेक्टेशन आपका क्या है, ठीक है, और कॉलेज ऐसे क्या अलग से आपके प्रोफाइल के लिए काम किया है, ठीक है, सो दैट कि आप एटलीस्ट एक अच्छे आरओआई का एक्सपेक्ट कर सकते हो. As sir, you said that we have the highest package of 27 LP from it starts from 8 to 9 lakhs. Is it true? Yes, sir, it is true. Okay. Actually, it is true. Because maximum students who are thinking कि 27 LPA from in tier 2 और tier 3 college, Yes. is it possible? बहुत क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, तो ये सही में आई मीन गया है स्टूडेंट्स को? Yes, sir. Yes, sir. गए मतलब like 27 LP का क्या होता है? It is not only nationally but internationally also. RIM gives us chance or opportunity to tie up Okay. with the companies. So Okay. the international companies gives us the highest packages. Nationally also they gives, but we also get the chance to connect with the international companies Okay, also. okay, okay. So it is like 27 to 28 LP. The package goes up to that. Okay. According to your study, what is your expected LPA? It's like about 10 lakh only. According to like agribusiness management is more than 10 lakh. It is ROI. Yes. सीनियर जूनियर का यहाँ पे बेसिकली इंटरेक्शन कैसा है, और हाउ वुड यू डिस्क्राइब ओवरऑल कैंपस लाइफ एट दिस कैंपस? Yes, sure, sir. Abhi senior juniors ka like they had just recently come, like 2 to 4 months they had come here. So as a junior, like I'm in the like we in our college we have the council council committee, a student Okay. council committee. Student council. Yes, in that there are various student council committee like student welfare, cultural committee. So due to this, what happened? Everyone gets to connect with each other. Okay. So juniors are like more enthusiastic. Right. This year students are more, as they are Gen Zs of course. So they are more enthusiastic and they are so passionate to do the things, and they are like so humble, polite to us also. They listen the carefully things, everything. They are like
actively participating with us. So like we had events like cultural, we have the talent hunt event. In that we get to know to each other in that event. After that we have Ganesh Utsav festival. Then we have the biggest event or like Rim Utsav. After that we conduct Shiv Jayanti. So there are many events in that. Even we have the trips like Manali, Nashik. We went to Dubai. In Dubai we have the exposure of 7 to 8 days. We have the exposure of Dubai. In that we have like sessions like in morning we goes for industrial visits. Like we visit industry to 2 to 3 industry we have visit there. Okay. After that we get the chance to expose Dubai also. Then we have Manali trip. It was Okay. like Manali trip is not for industry visit anything. It's like It's पूरा a fun मतलब trip. फन ट्रिप पूरा Okay. फन ट्रिप होता है मतलब लाइक फैकल्टीज स्टूडेंट्स सब मिक्स होके इवन आर चेयरमैन डायरेक्टर आर Okay. ट्रस्टी सोनिया मैम दे ऑल्सो मिक्स विथ अस एंड इट्स लाइक कम्प्लीटली इट्स लाइक अ रिम फैमिली टू अस इट्स अ रिम फैमिली So आप मुझे बताओ like what are the rules and regulation over there and is there management strict at this campus like अगर मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट है तो आप क्या फैकल्टी को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो? Yes, sir, definitely. I would like to talk about that. In academics, we have 80% attendance criteria. Okay. So we should fulfill it before our exam. So before our exam, faculties calculated the attendance. So if we had attendance like 80%, then we are only eligible for exam. If we didn't fulfill the criteria, then we are not eligible for the exam. So I think for our academics or for our placement, the attendance criteria is must. So it will definitely help to us. सो देखिए मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ठीक है, कि एक डेवलपमेंट के लिए हर एक स्टूडेंट का एक इम्पोर्टेंट होता है कि वो खुद से मेहनत करे, अपना सेल्फ एफर्ट्स बहुत ज़्यादा उसको इनपुट करना जरूरी है, ठीक है। तो एक चीज़ आप बताओ कि जैसे सीनियर आपके यहाँ पे होंगे तो आपने उनसे कोऑर्डिनेट किया होगा, ठीक है, तो उन्होंने ऐसा क्या अलग से स्टेप लिया था और क्या उस चीज़ से आपको हेल्प मिला है सो दैट कि आप कुछ अलग से प्लेसमेंट के लिए काम करो? Sir, actually, we had department like training and development department. So in our academics, we had lectures of training and development also. So in that lectures, we get to know about the soft skills like how to crack interview. Then they are regularly conducting our GD, then PI. So what are the tips and tricks to crack the interviews? So do's and don'ts in GD. So on regular basis we had the ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशंस। सो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब प्लेसमेंट के टाइम है ऐसा, बस मॉक पीआई अभी चल रहा है। मतलब जो रेगुलर सेशंस है हमारे टीएनडी के वो हमेशा एकेडमिक्स के साथ चलते रहते हैं। सो उस मतलब उसकी वजह से हमें बहुत हेल्प हुई है कि कैसे हमें इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, रेज्यूमे कैसा बिल्ड बनाना है, LinkedIn लाइक profile में आप हाउ टू ग्रो आवर लिंक्डइन प्रोफाइल। जैसे कि हमारे सीनियर्स के मतलब इंटरव्यू होते रहते थे, तो उन्होंने हमें वैसे बताया कि जैसे इंटरव्यू होते रहते हैं तो वो एक डायरी मेंटेन करते हैं कि जिसमें व्हाट क्वेश्चन दे हैड आस्क्ड टू अस, सो दे आल्सो टोल्ड अस टू मेंटेन आवर डायरी. So we will get to know that what type of questions interviewer ask, and हम लोग कौन से questions के आंसर नहीं दे पाए और उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है. So apart from our training and development internal faculty, we had training like Griffin Academy. So they are providing us the TND sessions like soft skill, then aptitude and technical skills. So definitely this is for our placement perspective. राइट ओके। सो आप मुझे एक चीज़ ये बताओ, लाइक सिंस यू आर फ्रॉम सेकंड ईयर, ठीक है, आपकी इंटर्नशिप तो ऑब्वियसली खत्म हो गई होगी, राइट? सो हाउ वाज योर इंटर्नशिप और उसमें आपको सीखने को क्या मिला? As I pursuing agribusiness management, so I completed my recent internship from Deepak Fertilizers. It is in Pune only. So in that my role was related to digital marketing, promotions and marketing sector. So it was like I was engagement to the farmers. So in that I built my more confident. My communication was little bit weak from starting. So it was through internship it built more stronger related to that, and I get more exposure of corporate style. Like I was working in office, so I get to know about how office works actually, means practically how it works. So it was really good. Okay, and what about you?
Sir, as I completed my internship in Bandhan Agritech, so it is the company is located in Pune only. The company is working on input sector and export sector. So I was working in on export sector. What was the time period? 2 months. 2 months. So it was a summer internship. So we had internship of 2 months. So I was working in export sector. So my job role was my internship role was management intern. So I did their market research. Then what are the challenges and opportunities in fruit export from India. So I get to improvise my communication skills. Then how to conduct the market research. Then what are the factors that are required for corporate culture. So हमारे कॉलेज में जो कॉर्पोरेट स्टाइल जो भी स्कूल है, मतलब वो डेफिनेटली उधर हेल्प हुआ कि एक कॉर्पोरेट कैसा चलता है, मतलब इधर जो हम लोग एक थेरोटिकल ले पाए वो उधर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर पाए. सो एट द एंड आप दोनों से मेरा और हमारे व्यूअर्स का एक लास्ट डिमांड है, दैट इज़ टिप्स. कुछ ऐसे टिप्स आप एक एक टिप्स दे दो सो दैट कि हमारे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो कि वो अगर रिम पुणे को चूज़ कर रहे हैं उनके लिए क्या वैल्यू एडेड करेगा, या फिर अगर वो पीजीडीएम करना चाह रहे हैं तो उनको क्या चैलेंजिंग फैक्टर फेस करना पड़ सकता है. एक एक आंसर. If you are looking for a best ROI college, then you should go for RIM college. Yes, as she mentioned that RIM is the best choice, no doubt. According to my personal opinion or my personal experience, I would like to say to the students that when you entered in the RIM, the best part is that you build your confidence. You gain a lot of knowledge, like not only theoretically but practically. As I mentioned, we go for exposure, we go for industrial, we go for visits. Like we had done many visits as we are in second year. So first year we have the many visits. So it is so beneficial for us, for our life. I would say not only for the corporate, but for our life. I would say that it's so best. So yes, you have to join the RIM. And one thing I would like to mention that in RIM, it is not like any barrier that how I would talk to the higher authorities or how I would talk to the faculty or seniors. You can directly talk to our chairman sir, our director sir, or our dean ma'am, HOD, our trustee ma'am. You can directly talk to them, or they are so humble and kind that they give a proper solution to us. So it's not like we have the barrier in RIM. So yes, of course, RIM is the best choice that you can choose for your career, for your PGDM. So yes, welcome to the RIM family, of course. Of course, I always said that a real game changer place आपके लिए चूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो ये था बेसिकली एक रिव्यू सेशन स्टूडेंट्स के साथ रिम पुणे के पीजीडीएम जो लोग करना चाह रहे हैं पीजीडीएम रिम पुणे से. ठीक है, उन लोगों के लिए ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, बट स्टिल इफ़ यू आर कन्फ्यूज टू चूज़ ए बेस्ट कॉलेज, ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, जाओ आप टेक्स्ट कर सकते हो, आपको प्रॉपर डिटेल आपको मिलेगा. इनसे अगर आप कोऑर्डिनेट करना चाह रहे हो तो मैं इनका नंबर वगैरह तो शेयर नहीं कर सकता, बट स्टिल मैं आपको इनका लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप चाहो तो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके ले सकते हो और इनसे आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हो, बिकॉज दे आर द ओनली वन जो कि आपको पर्सनली अच्छे से गाइड कर सकते हैं. एंड यस, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई का वो कल्चर बनाना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बस आज के लिए इतना ही. अगर आप में से कुछ और अगर आप ऐड करना चाह रहे हो तो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं. Sir, definitely your video will help us to other student because at the time of admission we got confused. Right. So So many students are confused. Yes, sir. Daily basis पे students are like to involve in our chat कि हमारा एक ग्रुप है, कम्युनिटी है, वहाँ पे स्टूडेंट्स कम्युनिकेट करते हैं कि कैसा है, क्या है, कौन से कॉलेज चूज़ करें. ठीक है, सो अगर हम किसी भी स्टूडेंट्स को रिम पुणे अगर सजेस्ट कर भी रहे हैं तो उसके पीछे कुछ बेसिक रीज़न होने चाहिए, उसके पीछे कुछ डिसाइडिंग फैक्टर होने चाहिए. ठीक है, सो जो हमने ओब्वियसली डिस्कस किया आज. ठीक है, सो हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया होगा. अगर आपको वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो पुणे में प्लानिंग कर रहे हैं पीजीडीएम करने का. बस आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव ए नाइस डे. thank you.